everyone, welcome back to the channel. So in this particular video हम लोग अक्टूबर के मंथली करंट अफेयर्स को देखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हुए हैं या जितनी भी न्यूज़ वगैरह बाहर आई है वो सारी हम इस वीडियो में एक क्विज फॉर्म के अंदर देखेंगे। एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। So, our first question is, who won GWNAs disputed presidential poll for a controversial third term? अगर आप लोग हमारी डेली करंट अफेयर्स को या हमारी वीकली सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से ही पता होंगे। बट क्योंकि ये हमारी मंथली करंट अफेयर है तो ये एक जिस्ट है। तो इसके अंदर हम पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को एक साथ एक जिस्ट के अंदर देखते हैं। सो moving on with the options, that is A. Alpha Conde, B. Cellulo Dallin Diallo, C. Lusana Conte, and D. Moise Deis Camara. So the correct answer is Alpha Conde, and he won GWNA's disputed presidential poll, the National Electoral Authority, stating the stage of controversial third term. Moving on with the second question. The second question is, the World Day of Audiovisual Heritage is annually observed on. The options are 22nd October, 24th October, 26th October, and 27th October. And the correct answer is 27th October. The World Day of Audiovisual Heritage is annually observed on 27th October. It actually raises global awareness कि जितना भी डेटा है, जितना भी मटेरियल है ऑफ प्रिजर्विंग ऑडियो विजुअल मटेरियल सच एज साउंड, रिकॉर्डिंग एंड मूविंग इमेजेस। एंड 2020 के लिए इस डे का थीम था योर विंडो टू द वर्ल्ड। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टेक जायंट हैज बिकम द बेस्ट एम्प्लॉयर इन 2020 अकॉर्डिंग टू US business magazine Forbes? And the options are Samsung, Apple, OnePlus, and Xiaomi. And the correct answer is Samsung. Samsung has become the best employer in the world in 2020 according to the ranking released by US business magazine Forbes. Samsung ने जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिनाउंड कंपनीज थी जैसे कि Amazon, IBM एंड Microsoft, इन सबको पीछे छोड़ दिया है। एंड इट एक्चुअली टुक अ जायंट लीप फ्रॉम प्रीवियस 76th रैंक इन 2019 एंड 2020 के अंदर Samsung इज एट नंबर 1 एंड इट हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर। Moving on to the next question, we have, which airline company has announced that the launch of 8 new flights between India and Bangladesh? The options are Air Asia, Qatar Airways, Singapore Airlines, and SpiceJet. And the correct answer is SpiceJet. And it has announced the launch of 8 new flights between India and Bangladesh under the air bubble agreement between the two countries starting November 5, 2020. And SpiceJet के जो ऑपरेटर्स हैं वो 4 टाइम्स उसे ऑपरेट करेंगे एंड नॉन स्टॉप फ्लाइट सर्विसेज देंगे बिटवीन कोलकाता एंड चिटागोंग। एंड चिटागोंग विल बी द 11th international destination of SpiceJet. So moving on to the next question. Aditya Puri retires as managing director of which bank? The options are HDFC, SBI, ICICI, and Kotak Mahindra. And the correct answer is HDFC Bank. जो आदित्य पुरी हैं वो HDFC के मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर हो रहे हैं एंड उन्होंने अपना चार्ज शशिधर जगदीशन को दे दिया है। अब वो न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे HDFC बैंक के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव, who has emerged as the country's most trusted and respected brand? The options are Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, Salman Khan, and Akshay Kumar. And the correct answer is Amitabh Bachchan. तायरा, जो कि ट्रस्ट, आइडेंटिटी, अट्रैक्टिव, रिस्पेक्ट एंड अपील, एक ह्यूमन ब्रांड को
रेट करती है एंड उस रेटिंग के बेसिस के ऊपर अमिताभ बच्चन इज द मोस्ट ट्रस्टेड एंड रेस्पेक्टेड ब्रांड अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल एनिमेशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ग्लोबली. द ऑप्शंस आर 20 October, 23rd October, 25th October and 28th October, and the correct answer is 28th October. So it is celebrated as International Animation Day and ये डे रिकॉग्नाइज करता है जितने भी आर्टिस्ट हैं या साइंटिस्ट हैं या फिर टेक्नीशियंस हैं वो एनिमेशन आर्ट को इंक्लूड करते हुए अपने करियर के अंदर या अपनी एनिमेटेड मूवीज़ के अंदर या किसी भी चीज़ को समझाते हुए उसका कितना एफिशिएंट यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 1.8 kilometer long Fakir Bridge to be completed by December 2020 connecting which two countries? The options are India and Bangladesh, B. USA and Russia, India and Nepal, China and Pakistan. And the correct answer is India and Bangladesh. And ये जो ब्रिज है ये 1.8 किलोमीटर लंबा है एंड ये इंडिया के अंदर सबरम और बांग्लादेश के अंदर रामगढ़ को कनेक्ट करता है. एंड this was announced by Road Transport Highway and MSME Minister Nitin Gadkari. The next question is 74th in Parity Day observed in India on which day? The options are 22nd October, 24th October, 26th October and 27th October. So the correct answer is 27th October. जो इंडियन आर्मी है वो अक्टूबर 27 को हर साल इन्फैंट्री डे मनाती है एंड द डे कमेमोरेट्स द फर्स्ट एंगेजमेंट विथ एन आर्म्ड एडवर्सरी पोस्ट इंडिपेंडेंस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू एनेबल e-boarding for international flights and the options are Bangalore, Mumbai, Jaipur and Hyderabad. And the correct answer is Hyderabad. And Hyderabad has become the first airport in India to enable e-boarding for international flights. An international e-boarding service ramps up safe travel option for international passenger choosing to fly out of Hyderabad. तो जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं जो कि हैदराबाद से टेक ऑफ होंगी वो सब पे इंडिया ने ई बोर्डिंग इनेबल कर दी है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू फिक्स फ्लोर प्राइसेस. द ऑप्शंस आर राजस्थान, कर्नाटका, केरला and Bihar. And the correct answer is Kerala. It has become the first state जिसके अंदर the floor prices of 16 varieties of vegetable उन्हें बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है. And the scheme would come into effect from November 1, 2020. This is the first time the floor prices is being fixed for vegetable products in the state, and this is the first of the state in the country also. It provided relief as well as support for the farmers. So, moving on to our next question. India to have its first sand dunes park. Where? The options are Mumbai, Karnataka, Goa and Odisha. And the correct answer is Goa. The World Bank accepted the proposal of Biodiversity Board of the state and उन्होंने 3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया है फॉर द सैंड ड्यून पार्क इन गोवा. एंड सैंड ड्यून्स आर जियोलॉजिकल डिपॉजिट फॉर्म बाय द एक्शंस ऑफ विंड. जो भी विंड्स चलती हैं उनकी वजह से सैंड ड्यून्स बनते हैं. एंड दीज जियोमॉर्फिक फीचर्स एक्ट एज अ नेचर्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ द ओशियन. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country started no mask, no service policy? The options are China, Bangladesh, India and America. And the correct answer is Bangladesh. बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि there will be no services for the people who don't wear mask. The cabinet meeting chaired by Prime Minister Sheikh Hasina
decided that no one will be allowed to enter offices without a mask. मतलब वहाँ पे जितने भी ऑफिसेज हैं, अगर आपको उनके अंदर एंट्री लेनी है तो आपको मास्क पहनना पड़ेगा. जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं वो उन लोगों के लिए कोई भी एंट्री नहीं है. इनफैक्ट उनके लिए कोई भी सर्विसेज नहीं है. The next question is, who is appointed as the president of MAI? And the options are Kamal Ginchandri and the second option is Deepak Ashir. So the correct option is Kamal Gyanchandani. And the Multiplex Association of India has announced the appointment of Kamal Gyanchandani, CEO PVR Pictures as president. एंड इनसे पहले जो दीपक अशीर थे उन्होंने एज ए स्टेप डाउन रोल प्ले किया है एज इनने फॉर्मर प्रेसिडेंट बनाने में. एंड MAI is a group of cinema operators that work with regular bodies and industries partner nationwide to highlight opportunities and address various challenges faced by the cinema and its sectors. So the next question is, the Dharm Chakra Pravatna Day is annually observed on. The options are 22nd October, 23rd October, 24th October and 25th October. The correct option is 25th October. महाराष्ट्र के अंदर अभी 64th धम्म चक्र परिवर्तन डे सेलिब्रेट हुआ है एंड हम इसे धर्मा दीक्षा डे भी कहते हैं. और जितनी भी बुद्धिस्ट फैमिलीज है उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है अक्रॉस द वर्ल्ड. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हिच गवर्नमेंट लॉन्च्ड मिशन शक्ति एज एन इनिशिएटिव फॉर वुमेन सेफ्टी? एंड द ऑप्शंस आर यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र and Tamil Nadu. So, the UP government has launched Mission Shakti program as an initiative to improve women's safety. इन्होंने जितनी भी वुमेन्स है उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है एंड दिस मिशन इज कॉल्ड मिशन शक्ति, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, who built the world's biggest bug farm? And the options are Insetif and Insect. The correct option is Insect, YNSECT. It actually builds the world's biggest bug farm and ये एक फ्रेंच स्टार्टअप है जिसने एक बिगेस्ट इंडोर इंसेक्ट फार्म बनाया है and the highest vertical farm in the world and the first carbon negative vertical farm in the world. The next question is, which government launches web portal for e-vehicle subsidy? And the options are Rajasthan, Tamil Nadu, Delhi and UP. And the correct answer is Delhi. And Delhi के अंदर around 24 October को ये पोर्टल लॉन्च हो जाएगा and the portal will ensure a hassle-free procedure. Buyers will receive subsidy within 3 days. एंड इसकी वजह से जो एयर पॉल्यूशन है वो भी काफ़ी कंट्रोल के अंदर आएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इनॉग्रेट्स वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे? एंड द ऑप्शंस आर नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी एंड अरविंद केजरीवाल. एंड द करेक्ट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. एंड उन्होंने 24 अक्टूबर को एक गिरनर रोपवे इनॉग्रेट किया है जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे है एंड उसे बनाने में ऑलमोस्ट जो एस्टिमेट कॉस्ट है वो है 130 करोड़. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच अमंग दीज इज द मूवी रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट? द ऑप्शंस आर अमय, तिरंगा, Section 375 and Article 15. And the correct answer is Amay. The Hyderabad police makes a film on women empowerment titled Amay. जो हैदराबाद की पुलिस है उन्होंने अमय नाम की ये फिल्म बनाई है एंड एक ये शॉर्ट फिल्म है in which they told us how women should react when facing with unexpected situations and aims to empower women to protect themselves from possible threat and dangerous situations.
Moving on to our next question. Which World Cup team star retires? The options are Virat Kohli, Surya Kumar Yadav, Tanmay Srivastava and R. Jagera. The correct answer is Tanmay Srivastava. He was the top run getter in 2008 U19 World Cup that India won under Virat Kohli's captaincy. And ये एक लेफ्ट हैंडेड श्रीवास्तव मतलब ये एक लेफ्ट हैंडेड प्लेयर हैं और इन्होंने 262 रन स्कोर किए थे एट 52.4 इन दैट टूर्नामेंट एंड इन्होंने अपनी रिटायरशिप ट्विटर पे भी अनाउंस की है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिल्म वॉन आउटस्टैंडिंग अवार्ड एंड द ऑप्शंस आर दंगल, आई राइज, बदला, JL50 and the correct answer is I Rise. I Rise एक्चुअली में एक डॉक्यूमेंट्री बेस्ड फिल्म है जो कि लीशरन सरिता देवी की लाइफ के ऊपर बेस्ड है जो कि एक बॉक्सर रह चुकी हैं एंड इन्होंने बेस्ट फिल्म ऑन वुमेन जो ये फिल्म है इसने एक अवार्ड जीता है बेस्ट फिल्म ऑन वुमेन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड at Tagore International Film Festival held in West Bengal. ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये 52 मिनट्स की है एंड इसने एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर का अवार्ड भी अचीव किया है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. हु कैप्चर्स जुपिटर्स आउटबर्स्ट? द ऑप्शंस आर जूनो, ASAT and JSLV and the correct option is Juno. Juno is a NASA space probe orbiting the planet Jupiter. Recently captured images of color bursts of lightning like electricity high in Jupiter's atmosphere. This is the first time these bright, unpredictable and extremely brief flashes of light, also known as transient luminous events or TLE, are seen in another world. Moving on to our next question. Which railway launches मेरी सहेली? Options are Northern Railways, Southern Railways, Southeastern Railways and Northeastern Railways. And the correct answer is Southeastern Railways. Actually, Railway has launched Meri Saheli initiative for focused action on women's security and all those passengers across all zones. मेरी सहेली का जो इनिशिएटिव है ये साउथ ईस्टर्न रेलवे ने सितंबर 2020 के अंदर ही शुरू कर दिया था एंड इसका जो बेसिक मोटिव है वो वुमेन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर है. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंगल यूज्ड प्लास्टिक इज बैंड इन. द ऑप्शंस आर दिल्ली, जयपुर, अंबाला एंड राजकोट एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अंबाला. द सिंगल यूज प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंडिया के अंदर यूज़ किए जाते हैं वो अंबाला के अंदर पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिए गए हैं फ्रॉम November 1st, 2020 and this awareness is being created among people and the announcements are also being made. जितने भी शॉपकीपर्स हैं अगर वो किसी भी सामान को इस टाइप के पॉली बैग्स के अंदर बेचते हैं तो उन सब के ऊपर फाइन है and the customers will also be penalized if they don't agree and accept normal bags. Moving on to our next question. Who will be the next CIC? The options are Sachin Kumar, Tanmay Srivastava, Yashwardhan Kumar Sinha and RN Naidu. And the correct answer is Yashwardhan Kumar Sinha. The former diplomat and Central Information Commissioner Yashwardhan Kumar Sinha will be appointed as the country's next Chief Informer Commissioner. And Mr. Sinha is a retired officer of an Indian Foreign Service and has previously served as India's High Commissioner to the United Kingdom and to Sri Lanka. Now, he is appointed as the member of Central Information Commission in January 2019. Moving on to our next question. Who among these won an international award for acting in a short film?
The options are Anushka Sen, Avneet Kaur, K. Mahasweta, and Faisal Khan. And the correct answer is K. Mahasweta. Tripura-based K. Mahasweta won recognition at the Las Vegas Movie Award 2020 for a role in a short film. ये 10 साल की छोटी सी बच्ची ने एक शॉर्ट फिल्म के अंदर फैबुलस एक्टिंग की, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले एंड शी वॉन एन इंटरनेशनल अवार्ड फॉर हर एक्टिंग. इन्होंने जिस मूवी के अंदर काम किया था वो बेसिकली वुमेन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर थी एंड इट एक्चुअली प्रमोट्स वुमेन एम्पावरमेंट. उसके ऊपर जो ये लड़की है इसको इसकी एक्टिंग स्किल्स के बेसिस के ऊपर एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला. So moving on to our next question. Who is the brand ambassador of Dr. Trust? The options are Akshay Kumar, Ranveer Singh, Ajay Nagar, and Rohit Sharma. And the correct option is Rohit Sharma. जो रोहित शर्मा जी हैं वो डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं. So moving on to our last but not the least question, we have who is the top buyer of Indian steel in lockdown? The options are China, Russia, Nepal, and USA. And the correct answer is China. China ने almost 1.9 million टन इंडिया से स्टील खरीदा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन एंड उसने ऑलमोस्ट 29% ऑफ इंडियन स्टील एक्सपोर्ट लिए हैं इंडिया से. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग then hit the like, share and subscribe. Have a nice day.